Hello students. Today our topic is meaning of moral education. Meaning means what is meant by word, text, concept or action is called meaning of. Expressing the relationship between part of a whole is called of. Then moral education may be defined as helping children and young people to acquire a set of beliefs and values regarding what is right and wrong. The set of beliefs guides their intentions, attitudes, and behaviors towards others and their environment is called moral education. Moral education is an abstract concept. Moral education, abstract concept means all the ideas without concrete form that cannot be adequately explained in scientific terms is called abstract concept. Means moral education is an abstract concept. Moral education starts earlier, what proceeds at very different speeds according to the domestic circumstances of small child. Moral education starts means begin. ये जो moral education है, ये जब शुरुआत इसकी होती है बहुत आहिस्ता से होती है. अर्ली मीन शुरुआत इनिशियली. व्हाट परस्यूड्स होता है मूव एट वेरी डिफरेंट स्पीड्स. डिफरेंट मीन नॉट सिमिलर स्पीड्स मीन्स रेट एट विच समथिंग मूव, दैट इज कॉल्ड स्पीड्स. अकॉर्डिंग होता है अनुसार बोलते हैं या स्टेटेड बोलते हैं. टू द डोमेस्टिक सर्कमस्टेंसेस, डोमेस्टिक होते हैं जिस तरीके के उस छोटे से बच्चे के घर के हालात हैं उसको हम बोलते हैं सर्कमस्टांस. जैसे उसके घर के हैं उस तरीके से वो जो मॉरल एजुकेशन है वो आगे बढ़ती है, उस स्पीड में आगे बढ़ती है. मॉरल एजुकेशन इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. तो नेवर एंडिंग्स का मतलब होता है सीम टू हैव नो एंड, जिसका कोई अंत ना हो. मीन्स मॉरल एजुकेशन का कोई अंत नहीं है. दैट एवरी इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी गोज थ्रू and it has to be recognized that this cannot be put in a box. Every individuals means every single persons and society means companionship or a voluntary associations of individuals for common ends is called society. इंडिविजुअल्स और सोसाइटी को इस मॉरल एजुकेशन के प्रोसेस के थ्रू होकर निकलना पड़ता है. इट हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज्ड होता है. नोन अगेन एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड ए रिकॉग्नाइज्ड. दैट दिस कैन नॉट बी पुट इन ए बॉक्स, इसको हम किसी डिब्बे में नहीं रख सकते. मीन्स पुट होता है ब्रिंग इन टू ए पर्टिकुलर स्टेट. बॉक्स होता है एक कंटेनर हैविंग ए रेक्टेंगुलर शेप एंड हैविंग ए लिड. एक रेक्टेंगुलर शेप का एक बॉक्स हो सकता है, उसके ऊपर एक ढक्कन जैसा लगा होता है. ये नहीं है कि मॉरल एजुकेशन लाई और उसके बीच में डाल के ऊपर से डब्बा बंद कर दिया. लेबल्ड एंड पुल्ड आउट टू बी यूज्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय मॉरल एजुकेटर्स. और ऐसा भी नहीं है कि उस डिब्बे के ऊपर एक लेबल चिपका देते हैं, मीन्स पेस्ट कर देते हैं. लेबल्ड हो गया, अटैच ए लेबल राइटिंग द एड्रेस इन कैपिटल लेटर्स, कि डिब्बे के बाहर लिख लिया ये मॉरल एजुकेशन का बॉक्स है. एंड पुल्ड आउट, और उसमें से जब हमारा मन चाहा उसमें से निकालेंगे. मीन्स पुल्ड आउट मीन्स विदड्रॉ फ्रॉम एंड अंडरटेकिंग. एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और जब हमें उसकी ज़रूरत है, रिक्वायर मीन्स कंपल्सरी नीड है. वाई मॉरल एजुकेटर्स होता है ए पर्सन हु प्रोवाइड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड मॉरल एजुकेटर्स. in a way, therefore we must each make sense of the shifting sense of morality. In a way, इस
जरिए। देयरफॉर मीन्स द रीजन, वी मस्ट ईच मेक सेंस, हर एक आदमी को इस तरीके की फीलिंग बनानी होगी। सेंस होता है फीलिंग दैट समथिंग इज द केस ऑफ शिफ्टिंग, शिफ्ट होता है मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेंस ऑफ मोरालिटी मीन्स पुश द प्रिंसिपल्स कंसर्निंग द डिस्टिंक्शंस between right and wrong. Although we can look to guide such a parent, although means in spite of the fact, we can look to guides means we have to guide such as a parents guides होता है a person who shows the way to others, जो दूसरों को रास्ता दिखाता है उसे हम क्या सही रास्ता बताता है उसे हम बोलते हैं गाइड्स। सच एज ए पेरेंट्स जैसे मदर एंड फादर्स हैं। टीचर्स मीन्स वन हु टीचेस इन स्कूल्स एंड priest means a religious leader authorized to perform the sacred rituals of a religion is called priest. Eventually we must try to crave out our own moral sense. Eventually means in the end, especially after a long delay. crave out होता है to make or create our own moral sense, हमें अपनी moral sense बनानी। moral sense होता है the ability to distinguish between right and wrong, सही और गलत के बीच में हमें फर्क जो है वो पढ़ना होगा, बनाना होगा। अल्टीमेटली वी मस्ट बिकम आवर ओन मॉरल एजुकेटर्स। इस तरीके से इन अल्टीमेटली होता है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होता है वी मस्ट, हम अपने मॉरल एजुकेटर्स खुद बन सकते हैं। मस्ट होता है नेसेसिटी, ये ज़रूरत है। टू बिकम मीन्स बिगिन टू बी। अर्लियर मॉरल एजुकेटर्स क्या हो गया मीन्स ए पर्सन्स हु प्रोवाइड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो हमें खुद पता होना चाहिए कि ये राइट जो रूल्स है राइट और रॉन्ग का उसके बीच में डिफरेंस का पता होना चाहिए। अर्लियर देयर इज ए मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट टू द सोसाइटी। अर्लियर होता है हैपनिंग इन शुरुआत में क्या थे मॉरल कोड क्या होते हैं ए सेट ऑफ रूल्स prescribing a righteous behavior accepted by a person or by a group of peoples is called a moral code. And conduct means the manner in which a person behaves is called conduct. टू द सोसाइटी मीन्स कंपेनियनशिप, किस तरीके से उसकी जो मैनर्स हैं मॉरल कोड्स हैं वो सोसाइटी में इस्तेमाल करता है। ऑल पीपल एविड बाय द मॉरल कॉन्डक्ट। एविड होता है ओबे, हमें वो सभी जितने भी लोग सोसाइटी में रहते हैं उनको वो मॉरल्स एजुकेशन की वैल्यूज़ जो हैं उसके साथ हम बंधे हुए हैं और उसको ओबे करना हमारा फ़र्ज़ है। वाई द मॉरल कंडक्ट मीन्स करेक्टर इज एन एवेल्युएशंस of an individual stable moral qualities is called moral conduct. The moral values become individualistic. In moral values जो हैं moral values means moralities is the differentiations of intentions, decisions and actions is called a moral values. Becomes individualistic means more interested in individual people than in society as a whole. It become personal means it become a private. Whatever moral values of one person may not be a moral values to the other person. एक आदमी की जो moral values होती है वही same moral values दूसरे individuals की नहीं हो सकती है। दिस इज बिकॉज द सोसाइटी हैज ट्रांसफर्ड ए लॉट। इसलिए इस सोसाइटी ने हैज ट्रांसफर्ड ए लॉट मीन्स मॉडिफाई लॉट होता है
many, a large number of things they transferred. The urge for money and materialistic things are eroding the values. The urge होता है to do something. Money is an economic unit. Materialistic things means the fundamental substances in nature, and that all things including consciousness or the result of mental interactions is called materialistic things. और eroding होता है gradually destroyed the values. ये जो मनी है, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, ये दोनों चीजें जो क्या कर रही हैं, मॉरल वैल्यूज को खत्म कर रही हैं, मींस द वर्थ ऑफ मॉरल वैल्यूज और डिस्ट्रॉइंग द corruptions means fraudulent conduct by those in power, typically involving in bribery is called corruption. May not be a moral value to may be a moral value to someone. कुछ लोगों को करप्शन जो है वो मॉरल वैल्यूज लोगों की हो सकती है. what not be a corrupt, लेकिन करप्ट में भी ये मॉरल वैल्यूज टू, लेकिन करप्शन जो है कुछ वो दूसरे लोगों की मॉरल वैल्यूज नहीं हो सकती है. At some point of time, the immoral values person may be caught and punished under the law of under land of law. At some point, एक ऐसा समय आता है जब वो करप्ट पर्सन जो है, जो इमोरल वैल्यूज करता है, मीन्स करप्शंस करता है, करप्ट हो गया, शोइंग ए विलिंगनेस टू एक्ट एज ए dishonestly in return for money or personal gain is called a corrupt. At some point, certain time means when the things should be happen. Immoral value क्या हो गई, is the violation of normal laws, norms or standards. Be caught, ऐसे आदमी जो हैं जब वो पकड़े जाते हैं, caught मीन्स होता है ट्रैप्ड, punished मीन्स उनको पेनलाइज किया जाता है, सजा दी जाती है, अंडर लैंड ऑफ लॉ, अंडर लैंड ऑफ लॉ हो गया जिस देश में वो इंडिविजुअल रहता है उस देश के कानून के हिसाब से उसको सजा दी जाती है. For many countries and regions in the world, for many countries, बहुत ऐसे देश हैं, countries हो गए, nations with its own government, regions होते हैं relating to an area, especially a part of a country, देश का कोई भी हिस्सा हो, in the world, दुनिया में. Moral education refers to the character education or education for morality. Character education means the group of qualities that make a person group different from others is called character education. Or education for morality. Education for morality means a particular system of values and principles of conduct is called education for morality. However, for a long time in China, however means still now, लॉन्ग टाइम इन चाइना, लंबे समय से चाइना में क्या हो रहा, द एम्फेसिस वॉज ऑन पॉलिटिक्स इन कमांड. एम्फेसिस स्पेशल इंपॉर्टेंस गिवन किस में दी जाती है, पॉलिटिक्स. जो पॉलिटिक्स इन कमांड मीन्स एक्सप्लोर्स द पॉलिटिकल मैकेनिज्म्स ऑफ द कल्चरल रेवोल्यूशंस and as a consequences होते हैं उसके effect, there have been a disagreement about the concept of moral education. disagreement होता है lack of consensus. तो उन लोगों में, बहुत से लोगों में वहाँ जो कंसेप्ट ऑफ मॉरल एजुकेशन में है, वहाँ उसके आइडिया में कंसेप्ट हो गया एंड आइडिया, उसमें वो डिफरेंसेस हैं, उसमें डिसएग्रीमेंट हैं, मींस वो लोग उसको नहीं मानते हैं. With all these meaning of value in education in general and especially in moral education, with all these meanings, with means possessing, all these होता है the whole amount, और meaning means scope. इसका scope क्या है, in
Education means the process of receiving and giving a systematic instructions, especially at school. And journal means common, especially होता है mainly in moral educations refers to what society sanction as right and acceptable is called moral education. It is very important for the efficiency of moral values to discover their axiological structuring. It is very important means ये बहुत ज़रूरी है. The value of the moral education is very important for the efficiency means quality of being efficient, to discover their axiological structuring. Axiologicals means axiology is the branch of physiology that deals with the nature and types such as in ethics and religions is called axiological structuring, including various opportunities. Including होता है make a part of a whole. Opportunities means chance. And operations mean the action of functioning. For their readjustment means the process of adopting the moral values is called readjustment. Thank you.